I'm 18 years old and I live in Karachi, Pakistan. I'm doing my A levels and I'm studying history and hopefully going to continue political science. So, Imaan is, as she mentioned, 18 years old from Karachi. Today, she'll be telling us a unique story about her life. But before we start that, here's what I learned about Imaan outside of her story. First of all, she loves weddings. Oh, yes, I love weddings and I attend every wedding I can. People know I love weddings so much, so people like invite me like, oh, मेरी खाला की इनकी की उसकी की शादी है, do you want to come? I'll be like, okay, I'm ready. Lekin, what do you like about the So yeah. weddings? Well, matlab, Mhm. dholkis and dancing and things like that, or dressing up? I think yeah, like the dressing up is my favorite part, but also the whole function, the decoration, the singing, the dancing, and all the traditions and like the rasmein hoti hain, like I just love all of them, and every culture and every every kind of shadi is different. I just love attending them. Right. More focused on the function part, less the actual marriage part. Wo to. Because the actual wedding in Exactly. Islamic weddings is just a nikah. Nikah to 10 minute mein ho jata. Exactly. Like no fun, yaar. 10 minutes. Yeah. Magar, if you do just a nikah without the other stuff, it saves a lot of money, I've heard. सुनने में तो यही आया लेकिन पता नहीं. Yeah, you're like my dad. Oh my god, मेरे अब्बा भी यही कहते हैं. But it's just like it's no fun, like शादी hopefully जिंदगी में एक बार ही होगी, why not make it like grand memorable? Yeah, that's true. But yeah, everybody should not spend extravagantly. But खैर Right. कोई नहीं. She also enjoys singing. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby, I've been moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit it, I was wrong. She sang semi-professionally, but since then she's not planning to pursue it full-time and will keep it as a hobby. I've sang for ads and Wait, Waki? I go into like competitions. Yeah. Ads like ishtihar, like jo TV pe aate hain. हाँ TV पे आते हैं. Like I've done like one or two. This was like a year ago. So now since like college started, I just toned it down because पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है. Right. Yeah, but hopefully I'm like gonna start doing everything again. So let's start with Iman's story. So I met this guy online and online on an app. The reason why I even used that app was because some of my friends, we used to prank call people on that app. So it's not exactly like a dating app. It's just more like making friends and like talking on different topics. So, you can put up a topic and then people from everywhere around the world Uh-huh. get connected to that like topic. They can see it on their screen and they can like reply to it. And and like they have like a timer type thing. Is this a text app or is it a video And chat? no, it's not a video call, but you can voice call for I think 2 minutes, like it's a timer. Oh, And then okay. afterwards you can, if you want, like get connected with the person again. So I've like prank called a lot of people on that app, and it's kind of like common on that app. Either some really serious people are on there, like actually discussing issues. Dumb people like me and my friends just talking about like pranking people. That's funny. Achha. So I got to know that app. I downloaded that app, and once or twice we actually met some really cool people and we all became friends. So I started using the app on my own, and I didn't really become friends with anybody on that app until I met somebody. Basically, Iman met a guy on a social app. Not a dating app, just an online chatting application. She wanted to protect his privacy,
so we will not share his name here. Basically, this guy is not from Pakistan. The rest, she will tell us. So basically, he was the one who put up a topic, and I think it was something about visiting your country. Like, tell me, like, why or how should I visit your country? So whoever can get connected to the call, like anywhere in the world, they'll just tell him about their own country. So, well, I didn't even like pick up the call because of that topic. I just picked up the call because he had a guitar in his picture, and I was like, okay, he has a guitar. Maybe he can like play and I'll sing. So, Yeah, right. I just like picked it up and like we started talking and just like really hit it off. The second we started talking, I don't know how it's we talked for 2 minutes on the thing and we're like, okay, this is really interesting. We started talking about Pakistan first and obviously weddings. So Did he know that you were Pakistani? yeah, you can put your country on that. So, there's always a flag that tells you where the person is living or from and stuff. Okay. And where was he from? He's from Algeria, but he lives in Paris for like university and stuff. Oh. So on his profile, it said Paris. So I thought he was like originally from Paris. Got it. So yeah, so like हमने फिर बात शुरू की and talked for like 9 hours the first time we even started talking. Whoa. Man. You started talking outside of the app basically because the app has a 2-minute limit, right? Yeah, exactly. So we started talking somewhere else. 9 hours. Again, वो summer vacation thing, there were like nothing to do anyway. So Right. yeah, so we talked and How old is he, by the way? he's 20. Okay. Yeah, then summer break makes sense. Yeah. Yeah, so we both were on our summer breaks and Yeah. he was actually like packing because he had a flight to Algeria, like afterwards, 2-3 days later. So yeah, and we became like I think we became more than kind of friends. Like we had the idea, should we say okay, this is something else? Yeah, it just started happening. So yeah. Acha. This was how long ago? This happened in April, 11th April. Oh, okay. So it's still less than a year ago. Yeah, Right. yeah. It's really recent. Yeah. So Pir, he's from Algeria, right? Originally, you said? Yes, he is. Okay. Yeah. So then he was flying back to Algeria, and I guess he was trying to kill time. So you and him started he was on talking. the app. Actually, he had a lot of friends on that app, like like actual friends, and Oh, okay. yeah. And I was like, okay, I've never made friends on this app, so It's kind of like Discord, I guess. Lots of people become It is. friends off of Discord too. Yeah. Yeah, it is exactly like Discord, actually. It's just that thing has a time limit. This doesn't. So yeah. Got it. Right. Makes sense. फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद we talked about French culture and Algerian culture, and we just started like exchanging a lot of cultural backgrounds, and really, I mean, he's Muslim, so like he is Muslim. Okay. Yeah, right. Yeah. So we talked about like almost like Islam there and how it's like portrayed, and just politics of Algeria, of France, of Pakistan, and everything, and we kind of connected on a lot of levels, I guess, like mental, emotional, everything. So then when he went back to Algeria, he introduced me to his mom. Introduced to what? To his mom. Oh, wow. Like on the phone? Like Skype or something? Yeah, on the phone, like a video call, yeah. Oh, wow. Nice. On WhatsApp. How was his mom? Oh, she's so sweet. And she was like totally, I guess accepting. And yeah, she was like really nice. And then he introduced me to his sisters and like everyone, the whole family. Like it was his uncle and aunt and all the nephews and nieces and everyone. Wow. And I think in less than a month. All of this took place in less than a month, huh? So it was very fast paced. Yeah, all of this was really fast. Yeah. That's cool. And but फिर the hard part was मेरी family पे bomb drop करना. Oh yeah, उनको भी पता नहीं था. उनको पता था कि I made a friend, but उनको ये नहीं पता था कि it's something more than a friend. So फिर I started off with my amma and I was like,
you know that I made the friend, and she knew like where he's from, and I talked to the mom and the sisters and whatever. Hmm. But she was never really too interested. I'd say she wasn't even like keen to or eager to know कि क्या हो रहा है or who is here, because she never, I guess, imagined कि कुछ और नया हो सकता है या कुछ ज़्यादा हो सकता है friends के, इसके अलावा. So yeah, so I was like Hmm. उनको ease down करने के conversation में, You like this guy? yeah, okay, I like him, and okay, we talk about a lot of meaningful stuff, and typical amma, what will she think? अच्छा online मिल लिया, पागल हो गए दोनों. But, I it's mean, like, drama बना हुआ है, right? nah, exactly. The first thing she said like अपने drama बंद करो. Yeah. It's more than that. It's not like just आजकल pranking का culture बहुत होता है ना. हाँ. Have you seen those YouTube videos where people are like, "Oh yeah, watch me prank my mom by telling her I found some girl and." Yeah, and मेरी मामा को तो सही shocker मिल गया. She अच्छा, तो फिर beginning she thought you were joking around. फिर क्या? Yeah, she was like, yeah, I'll see how long this lasts. She was like, oh, I give you like a month. I was like, हाँ. okay, give me a month. वैसे तुम्हारी तुम्हारी अम्मी ने लड़के को देखा था? मैं पिक्चर्स विक्चर्स दिखाती रहती थी, इसके अच्छा. वो है, इसके फ्रेंड्स हैं, ये Got it. फैमिली है. So इश्यू तो देखा हुआ था उन्होंने, but बात नहीं की थी मैंने. Yeah, मतलब इतनी दिलचस्पी हाँ, नहीं थी अभी. नहीं थी बिल्कुल भी नहीं. So अच्छा. फिर उसके बाद खैर उनका 1 month ने मुझे टाइमलाइन दिया था, वो खत्म हो गया. Everything is going good. Right. By the way, do you have siblings? Oh yeah, I have a younger brother. Okay, got it. Yeah. So I have one younger brother. Yeah. तो खैर ये स्टोरी चलती हुई अम्मा के साथ थोड़ा रिफ्ट्स होते रहे, back and forth कि अच्छा there is somebody, and then she'll be like नहीं ऐसे नहीं होता, think logical, think practical, he's in another continent, he's in another, like, we don't know anything about them. And then came like the hard part when we're like, okay mama, this is a thing, it's happening, it's like 7 months हो गए हैं, 6 months हो गए हैं. Oh wow. अच्छा इतना टाइम गुजर गया. हाँ गुजर गया. And Hmm. I mean, she still wasn't like convinced that this is anything more than. But खैर जब उनको realize होने लग गया कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, तो then she just sat me down and she's like, "Do you know what you're doing, Imaan?" And I'm like, "Yeah, I Mm-hmm. know what I'm doing." Mm-hmm. But I guess parents को I think थोड़ा convince करने में time भी लगता है. But she was just like, ऐसे नहीं होता, like this is not how a relationship works. This is not how a Hmm. marriage will work in the future. Obviously अभी तो नहीं कर, लेकिन I was like, mama, you need to get comfortable to the idea that he exists in my life. Ah, But right. so she wasn't really happy about it. हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी. Hmm. Was your dad aware of this? No, not in the उनको नहीं पता beginning. था. No. Okay, yeah. नहीं अभी नहीं पता था. अभी मामा अगेन शी वाज जस्ट लाइक ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, when it's meaningless. ऐसे ही हाँ परेशान हो जाएंगे बाबा. हाँ एग्जैक्टली, बाबा को अभी नहीं होता unless it's like something too serious. Mhm. तो खैर फिर ऐसे होता रहा. एंड फिर मामा के रियल इश्यूज आ गए कि अच्छा अब मुझे बताओ जरा सिक्योरिटी रीजन, मैं तुम्हें बताती हूँ ये गलत क्यों है. तो फिर Right. मामा शुरू हो गई. ओके आई नो कि शी इज नॉट रॉन्ग, मतलब ऐसे केसेस होते हैं एंड Hmm. रियल है ऑब्वियसली, जो भी कंसर्न्स हैं उनके वी डोंट नो, तुम्हें क्या पता, अभी तो तुम इट्स बिहाइंड द स्क्रीन. ओके Right. स्टिग्मास भी लगे हुए हैं सारी चीज के पीछे, बट Mhm. कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाते थे कंसर्न. तो खैर वो वाले सारे कंसर्न्स को अब आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दीज कंसर्न्स. Mhm. She doesn't want to do that, I guess. Still doesn't actually. I mean, to a large extent, अभी तक उनको वो है कि सिक्योरिटी की वजह से कि पता नहीं हम तो मिले भी नहीं है किसी को, ये वो. And then when it comes to the point कि अच्छा बात तो करें एक दफा, आप अम्मा से उसकी बात कर लें, आप उससे बात कर लें, वो उनको करनी नहीं है. So so it's kind of like तो मतलब बात के लिए भी वो open नहीं थी. She did not want to talk to नहीं, him. she's still not open to like talking to with the family or अच्छा अच्छा. ये भी है कि लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि Oh yeah, so he talks in English? ये तो मैंने पूछा ही नहीं. yeah, he talks in, वो तो बहुत languages बोलता है. He knows French. basically in Algeria, basically since they were a French colony, right? तो Mhm. उनकी main language तो Arabic है and second language French है.
So people don't really speak English there. They learn French instead of English. Mhm. पाकिस्तान में हम तो English ज़्यादा बोलते हैं, like उर्दू के बाद English होती है. So, the only reason the guy he learned English and all these languages was, I think, 2-3 years ago when he went to Paris. Right. Yeah, so he learned like Japanese and Italian and Spanish and pata nahi kya kya. But Wow, really? yeah, Acha. so yeah, Hmm. he's really into cultural things. तो अब मेरी मम्मा को तो नहीं आती ना फ्रेंच और अरेबिक और सब कुछ, तो इंग्लिश और उर्दू तो आती है उनको. Yeah. तो she was like reluctant to talk to the अम्मा. Like मैं तो कैसे बात करूंगी, मुझे तो आती नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, ये कैसे होगा. तो फिर हाँ. उनको हो गया अच्छा, अगर आगे मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ तो ये आगे कैसे होगा, तुम लोग कैसे बात करोगे, मतलब मैं उनसे कैसे बात करूंगी, मुझे कोई मसला हुआ तो तुम क्या ऐसे बैठ के ट्रांसलेट करती रहोगी सब कुछ. हाँ. फिर उनको ईज डाउन किया, मम्मा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, हम बैठे हुए हैं इधर सब बात कन्वे करने के लिए, Mhm. it's like it's not gonna be so like a difficult of a task. But खैर फिर मामा को थोड़ा मैंने कन्विंस किया, आप उससे बात कर लें, the guy. हाँ. उससे थोड़ी सी बात हुई उनकी, बहुत थोड़ी. पर उन्होंने बोला अब मैं नहीं बात करूंगी, और बस. Hmm. Like it wasn't even like an introduction, बस उन्होंने थोड़ी सी WhatsApp पे they talked a little bit and he introduced himself and he was like very nice, and अम्मा ने तो फौरन शट डाउन कर दिया ना बस कॉन्वर्सेशन की, मैंने नहीं बात करनी. तो कितनी वो एक ही बार बात हुई? नहीं 2 दफा हुई थी एक्चुअली. एक 2 दफा. दफा तो इंट्रोडक्शन वाली पॉइंट के हुई थी, दूसरी बार I was really sick and I don't know, like he talked Hmm. about something which I don't even know still, but I don't know about that. So yeah, एक दफा like officially वाली बात हुई थी. अच्छा, अच्छा, ठीक है. I'm guessing that was pretty recently. Yeah, Yeah. सारा yes. कुछ बड़ी तेजी से जा रहे हैं. Pause. Did your mom ask you this कि अगर मतलब शादी हो भी गई तो would you relocate to Algeria? Like how would you living situation क्या Uh, क्या करोगी? हाँ, लिविंग सिचुएशन अम्मा ने तो नहीं पूछा बिकॉज़ उनको अभी भी लग रहा है कि इतना सीरियस नहीं है. नहीं होने वाला. लेकिन Right. हाँ, एग्ज़ैक्टली. But the plan would be to live in Paris because he would apply for Mhm. citizenship later Right. and settle there Hmm. because he has family in Paris also. So it's not like difficult. Yeah. लेकिन कोई बैकअप प्लान है? Would you be open? क्योंकि बंदे को पता भी होना चाहिए ना कि अगर प्लान ए नहीं काम करता तो प्लान बी हमेशा has a backup. You should have one. Well, I guess Paris is the main one. Second would probably be America, I guess. Oh, okay. Because we need to be somewhere to languages to समझ आते हैं. Algeria में हाँ. जाके I won't be able to do anything, and Pakistan में आके he can't do anything. Right. So Because that's the it's only thing I would be concerned about कि exactly. अमेरिका तो आपको पता है प्लान बी अगर आप अमेरिका को रखते हो then you definitely need a plan C. क्योंकि आजकल Yeah. वो अंदर नहीं आने दे रहे किसी को वो दीवार बनाने के चक्कर में. हाँ, तो ये तो है. But खैर that's still like I guess 4-5 years away. yeah, that's true. Obviously उसकी university ends, then my university ends, and obviously he needs to settle in and start making Yeah. money obviously. So Right. yeah. Yeah. Okay. What's he studying, by the way? He's studying engineering, software engineering, yeah. Oh, nice. So Okay. yeah. Good choice. So then your mom spoke to him. एक दो बारी बात हुई. हाँ, I know. I'm always like, giving her time. कि अच्छा कोई Yeah. बात नहीं. I understand. Maybe if I was in her place, I would Hmm. totally be, a little bit concerned. या मैं भी शायद थोड़ी ऐसी हो जाती. Yeah. But इतना नहीं, वो तो बात ही नहीं करती. Ignore कर देती हैं. हाँ, even when I'm talking, it's like, Hmm. मुझे पता है तुम किससे बात कर रही हो. जाना अम्मा. But yeah, and it's really like the thing is that everyone around me has talked to him. Everyone around me is friends with him. People in my family, people, all my friends, like all of my close friends. Oh wow. Okay. My friend's mom, my Hmm. best friend's mom, she went to Paris for like vacation. Only the mom. So he was there and he met her and he like Wow. toured Paris with her kind of, and he was like the tour guide guy and telling her all the good places. They spent a lot of time together. Wow. Acha, really? Like everybody, your family and friends all know about it. Yeah, and now my dad also knows. Yeah, so Acha. my dad, I think, is more of a person who will
say or talk or take some action, Hmm. अगर एक पॉइंट पे आ जाए कि उनको कुछ करना है, अभी जस्ट लाइक अच्छा ठीक है देखते हैं, Right. आई एम नॉट गोना Mm. बी टोटली ओपन टू द आइडिया और आई एम नॉट गोना बी टोटली आंखें बंद टू द आइडिया, हाँ. सो ही इज जस्ट लाइक लेट्स सी, लाइक इट्स टू फार अवे फॉर मी टू, Yeah. अभी मैं साइड में बैठता हूँ. Right. हाँ अभी अभी बहुत टाइम है, तो मतलब लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट, सो बट या Yeah. That makes sense. मेरे अब्बा तो यही मुझे कह रहे हैं कि वी वर वाचिंग अ शो, वी वर वाचिंग ब्लैकलिस्ट, और ना मैं अब्बा के साथ देखती हूँ बहुत ज्यादा, तो देयर वाज एन एपिसोड सेट इन पेरिस, तो मैं बोल रही थी आई विश आई वाज इन पेरिस, मेरा ड्रीम सिटी है, मुझे भी जाना है। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें किसने रोका है पेरिस अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने बोला क्या, ये अच्छा. क्या हो गया एकदम से। तो मतलब काफी ओपन माइंडेड है. हाँ बट इज लाइक चिल ना, अम्मा तो Right. बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा. तो हाँ, तो फिर मैंने बोला कि क्या मतलब पेरिस, अभी आपने मुझे बोले कि पेरिस अप्लाई करो, अम्मा ने तो मना कर दिया था, यूरोप तो तुम जाओगी ही नहीं कहीं। अच्छा. अच्छा. हाँ. So she knows कि he's there now, वरना उसके अलावा भी when he didn't exist and in my life and we were talking about university options, she Right. would still like go somewhere जहाँ पे थोड़ी family हो, तो मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो कि कोई है वहाँ पे, not a हाँ. completely new place, like, and I think people settle in well, like, Yeah. I mean, मैं यहाँ पे families को जानता हूँ जो probably they're more restrictive than your family. हाँ, So you're 18 years old, right? yeah, I'm 18. I just turned 18 in October. हाँ. तो what I'm curious about is this. So you met him when you were 17 Yeah. and now you're 18. Did your mom ever bring up कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है maybe? हाँ, मम्मा ने बोला वो। क्योंकि कुछ families में लोग जल्दी शादी कर लेते हैं. मेरी फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट है एक्चुअली। अच्छा. मैं जितनी ज्यादा प्रो शादी हूँ, अब मेरे अम्मा पापा बिल्कुल ही उतने ऑपोजिट हैं, मतलब जितना भी आए आई बी लाइक, आई मीन आई नो they're right, I agree with what they think and like plan, वो कहते हैं कि वो तो मतलब बाबा was like when I was like growing up and शादी के conversations फैमिली में फैमिली टेबल पे जा रहे थे और फिर मेरी शादी and stuff, तो Right. अब्बा ने तो बोल दिया था कि शादी के नाम तो लोगी नहीं until you yourself are financially stable। Mm-hmm. तो मैंने बोला ठीक है, आई मीन आई डोंट That's लाइक a very good mindset actually. agree। हाँ, Mm. तो अम्मा ने भी बोला कि जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, तो हमारी शादी तो नहीं होने वाली। तो तुम Mm. पढ़ लो और कमा लो, एंड देन जब तुम खुद हो जाओगी तो फिर बात करेंगे, एंड Mm-hmm. आई वाज लाइक ओके, बट अब सिचुएशन थोड़ी ट्विस्ट हो गई है। तो Hmm. Yeah. इसके पीछे एक्चुअली बहुत अच्छी राय होती है. मैंने ये हम्म गौर किया कि अगर लड़की अपने हम्म पैरों पे खड़ी हो सके ना, तो हम्म अल्लाह ना करे मतलब बाद में कोई मसले हो जाएं, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, इफ शी नीड्स टू सपोर्ट हरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली, ये बड़ा मसला रहता है हमारी सोसाइटी में, जो औरतें अनफॉर्चुनेटली विधवा हो जाती हैं या डिवोर्स हाँ, और समथिंग, वो बेचारी अपने बच्चों एग्जैक्टली, के साथ पता नहीं किधर किधर धक्के खाती रहती हैं. सो एग्जैक्टली, मेरे सामने इतने सारे केसेस हैं, लाइक इन माय फैमिली एंड माय फूफो, इट हैपेंड टू माय फूफो, या. and like she's educated like बहुत ज़्यादा, and even though she got divorced, like she has everything, she's making her daughter study in the best schools, and वो अपना घर बना रही है अकेले, like it's all pretty much set for her, and then मेरी अम्मा के साइड पे एक और ऐसे हुआ है जो उन्हें नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी, and her husband died and Oh no. she's Yeah. really like not in a good situation, तो हाँ. मतलब अम्मा यही मुझे बोलती हैं कि अपने सामने एग्जाम्पल्स देखो, सो Hmm. पढ़ाई and earning yourself is like really important, and I Right. agree with that totally, I'm Yeah. not anything like कोई against नहीं है मेरे इसके। Would you be open to maybe down the road your mom would be open to an option कि अभी तुम बेशक engagement कर लो और 3-4 सालों बाद when you're ready, when you're graduated and have a degree and stuff, then you can tie the knot. हाँ, As an option, would no, you consider that? actually I don't think she would, because उनको अभी तक सिक्योरिटी और इन सब का ना कंसर्न्स नहीं उनके पूरे हो रहे। Well, she wouldn't, but would you be open to it? Yeah, To that type of option? I would That be, would make yeah, sense. I would Yeah. be। मतलब इतनी जल्दी तो नहीं है ना, इतनी जोर की शादी तो नहीं आई हुई. नहीं नहीं नहीं, I would Uh, be like totally okay with that option, but right. मेरी मम्मा का ये है, अब again पाकिस्तानी कल्चर एंड सब कुछ सोसाइटी में मिला के
वो कहती हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसी शादी नहीं होती, इट्स यूजुअली इन सम पीपल वी नो इवन इफ इट्स नॉट इन द फैमिली। तो शुक्र करके फैमिली में तो मेरे लिए कोई है ही नहीं ना, क्योंकि मैं सबसे ओल्डेस्ट हूँ तो सारे Oh बच्चे yeah. अभी तो लोडिंग में हैं सो Right. मम्मा ये कहती हैं कि वी जो जिससे भी हो आगे जाके हम Hmm. उनको जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं जो उनको जानते हैं। सो वी नो हाउ पीपल विल बी, अब मामा ये सोच रही हैं, अब कोई somebody is living in Algeria, अब मैं उन लोगों को कहाँ से ढूंढूं जो उन लोगों को जानते हैं, राइट? सो you हाँ. can't get like a background information और ये वो। Hmm. I'm just telling her that अम्मा, and one idea we really I think हमारे फड्डा हो जाता है इस बात पे कि वो कहती हैं marriage is between families and I'm like a marriage is between two people मामा हाँ. so yeah, she's really के अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे Mhm. कहेंगे कि तुम्हें मिल गया है बस ऐसे ही और तुमने उठा के मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, Mhm. मेरी नाक नहीं कटवाओ and all these like नहीं हमारे यहाँ किसी की शादी नहीं हुई है इन लाइक अनदर कल्चर इन अनदर, कोई कल्चर डिफरेंट है, कोई कंट्री डिफरेंट है, Mhm. उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा है। आई फील लाइक इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स अप अ बिट, नॉट Mhm. एवरी लाइक मैं उनको एक और भी चीज सिखाती हूँ कि भाई मामा, इट्स Mhm. लाइक 7 बिलियन लोग दुनिया में हैं, मुझे जरूरी है कि आपके ही फ्रेंड सर्कल में 100 लोगों के दरमियान में कोई बंदा मिलेगा, Hmm. देयर इज प्रोबेबिलिटी यार मामा, इतना ज्यादा लोग हैं हाँ. दुनिया में, बट वो कहती हैं नहीं। ज़रूरी नहीं है कि your best match is living down the street or in the same city, right? एग्जैक्टली या Right. बट उनको लगता है कि बेस्ट मैच छोड़ो, बेस्ट Hmm. फैमिली मैच होना चाहिए दोनों जाए कहीं और। Yeah. मतलब traditional thinking है थोड़ी. हाँ बहुत ज्यादा। सो हाँ. उसको थोड़ा Yeah. I kind of see where she's coming from. अगर खासतौर पे देसी कल्चर में हम्म मैरिज फैमिलीज के दरमियान भी होती है इन द सेंस कि हाँ आपने मतलब अपने हस्बैंड को सिर्फ कुछ नहीं करना पर ऑल्सो हिज मॉम हिज डैड हाँ इन लॉज और और कई बार उनके साथ रहना भी पड़ता है. या एग्जैक्टली बट द थिंग इज कि मुझे इस बात पे रिलीफ किया है कि द गाय इजंट लाइक दिस एट ऑल। um Mhm. he is family oriented but not to an extent where I have to live with the family or Mhm. just be there to please around and stuff. That's why the first plan is not to be in Algeria but to be in Paris, so Yeah. away. And it's not like बिल्कुल ही family को visit ही नहीं करना है and all that, नहीं ऐसा भी नहीं है, Mm. obviously in like vacations or special occasions or ईद वगैरह, I mean जो भी होता है खैर, but not Yeah. only living to please the family. Right. Right. So yeah. Mm. वैसे would you get homesick एकदम ही तुम्हें पता है शादी के साथ एकदम ही जिंदगी बदल जाती है राइट. Your Yeah, whole ये तो है। lifestyle will change. अलग शहर हम्म अलग लोग or हम्म now you have somebody to live with. So it's a huge change. Sometimes it can be a shock. कभी इस चीज़ का डर लगता है. आई थिंक फ्यूचर में जाके मुझे हो सकता है होम सिक वाली फीलिंग हुए और ऑल दीज थिंग्स, वो तो इनएविटेबल है, मुझे लगता है वो Hmm. होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट आई थिंक एट दिस पॉइंट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दीज लाइक खड्डे with mama and all लोग these क्या like कहेंगे. distance between us and I'm so sick of like हाँ लोग और ये mindset and all that, so at this point Hmm. I think I would be better off थोड़ा दूर थोड़ा but डिस्टेंस के साथ. डिस्टेंस के साथ हाँ. या एंड एग्जैक्टली अभी आई थिंक रिलेशनशिप को लाइक 9 months हो गए होंगे, 9-10, तो Hmm. आई डोंट नो लाइक पीपल रियली थिंक कि बहुत इजी है बट नहीं है यार, इट्स नॉट Oh इजी yeah, I'm sure. एंड स्पेशली द फैक्ट दैट वी हैवंट मेट स्टिल। Hmm. Yeah, um face to face, right? yeah, and it's just that कोई इरादा है मिलने का. yeah, he's coming soon To Pakistan. yeah, yes, to अच्छा, Pakistan कराची. he's coming, वाकई. yeah, Well, that's cool. Karachi, yes Wait, he got a visa. नहीं अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ बट प्लान बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा savings, हाँ. and I mean obviously it's expensive because he's really independent, he doesn't like take money from his family, so he's Hmm. supporting himself in That's good. things Yeah, like that's good. Paris. Yeah, so and जब तक there's enough money and savings and stuff तो फिर Yeah. yeah. Visa process can take some time, so yeah. Exactly, so maybe like next year के mid में stuff, we start Right. doing it like yeah. Hmm. बाकी what your mom said about लोग क्या कहेंगे.
मुझे Hmm. अब मुझे इतना पता नहीं कि लोग कौन से हैं आपके इर्द गिर्द, बट like you're mentioning that your family, your friends and your friends' parents are aware, सारों को पता है लड़के के बारे में, हाँ, तो सबको पता फिर है। लोगों का मसला क्या है? लोगों का मसला लोगों का नहीं है। हाँ, इन लोगों का नहीं है, फैमिली वालों का है। मेरी अच्छा। इमीडिएट फैमिली इज हम्म। प्रीटी कंजर्वेटिव आई गेस। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओपन है। हाँ, कुछ लोग हम्म। ओपन है, कुछ लोग ज्यादा है। मेरी अम्मा सबसे ज्यादा कह सकते हैं थोड़ी कंजर्वेटिव है। हाँ। और मेरे नानो वगैरह राइट। एंड मामा मामा की फैमिली इज अ बिट मोर। Abba ki family is a little bit laid back. If या। it's working out good, it's fine. But Amma, not nice. I guess I get it because she's brought up in that kind of हम्म। mindset, and I wouldn't completely blame her because it's what she's, grown up to be and how उनके इर्द गिर्द क्या लोग कहेंगे और उनके लिए भी एक वो हो जाएगा कि ज़ाहिर है if this even goes out, like, if it ends up good and it happens, हम्म। everything, तो आई राइट। नो कि उनको भी लोग आके कहेंगे ओ व्हाट हैव यू डन, ये कैसे कर लिया तुमने अपनी बेटी के साथ. So हम्म। she will have to face that, but I हम्म। think the thing you're supposed to keep as a priority is कि if I'm happy or not कि लोग राइट। happy होंगे या नहीं. Right? राइट। So राइट। या वही ना, you mentioned कि you kind of understand where your mom's coming from. yeah, I do. मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि Hmm. मतलब if you take those two facts, first of all you're 18, Hmm. so you're very young, and secondly कि इतनी दूर जाना है, right, outside of the इतनी country. दूर है तो exactly. हाँ. मसला बस ये है कि if अगर your mom doesn't know anybody who lives around you where you're going to be going, right, तो अगर कोई मसला हो जाता है, maybe you need help, maybe something like that, parents sometimes feel, I think, really powerless. Yeah, तो exactly. अगर वो Yes. मदद नहीं कर सकते then they feel a little anxious, I guess. तो वो जो हाँ. sentiments हैं वो मैं उनको मैं समझ सकता हूँ. हाँ, वो तो इवन आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली इट इज अ बिग स्टेप एंड ऐसा स्टेप है कि मामा के सामने तो कहीं भी नहीं हुआ होगा ये. यू नो Right. Yeah. अराउंड हर. Yeah, playing the waiting game might make sense in the sense के मना लो उनको. एग्जैक्टली एंड वो भी अपनी बेटी के साथ पहली दफा Yeah. हो रहा है सब कुछ. Ah. So I get it and I am totally understanding, but sometimes it gets a little bit too much I'm when you're sure, just yeah. like I'm waiting and waiting. Hmm. But yeah, बाकी जो है, I think cultural barrier, वो first of all, you're not breaking any law, right? no, exactly. Secondly, even Islamic standards, by Islamic standards, you're not doing anything wrong. Exactly. वो भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो. तो तीसरा हाँ. बस ये है कि there's a racial barrier, there's a geographical barrier. वो, I Hmm. mean, we live in the age of globalism, so it's very Exactly. difficult. I can understand where your mom's coming from. लेकिन Hmm. slowly over time, interracial marriages are becoming more and more common. Exactly. And now all I do is like I search up these people who married like intercultural और वो पाकिस्तानी descent के हों और मैं मामा को articles पढ़ाती हूँ. मामा देखिए हाँ. everything is going good. चलिए देखिए ये लोग भी तो workout कर रहे हैं ना. Then उनको हाँ. कहीं से article मिल गया एक where the girl was from Pakistan and the guy was also like from Pakistan, but ना वो ज्यादातर अपनी life France में गुजारी थी उसने. अच्छा. एंड फिर उन्होंने देखा उस आर्टिकल में ना द गर्ल डिवोर्स द गाय बिकॉज वो ना घर के काम नहीं कर सकती थी और वहां पे तो काम सारे करने होते हैं. Oh yeah, right. और अम्मा कहती है ये तो तुम्हारे साथ होगा क्योंकि ना तो तुम कोई काम करती हो ना तुम्हें खाना बनाना आता है ना तुम्हें ये करना आता है तो मैं बता रही हूँ ये नहीं चलेगा. I was like, माँ. ये बात वाकई सही है. Actually, I know several Indian co-workers especially, and हम्म. a few Nepali, Pakistani भी जो यहाँ आते हैं ना, in the US. I think Europe is like this too actually. कि या. I've had several people actually tell me कि यार यहाँ बड़ा मुश्किल है, मेरा तो वहाँ गाड़ी में गैस भी नहीं भरनी पड़ती थी. उधर लोग होते हैं काम हाँ. करने के लिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते एग्जैक्टली. हैं, especially Indians, they are already oftentimes the ones who come to the US are the ones who are already doing really well in India, meaning they're like middle class or above. या. इधर आके फिर सारा कुछ खुद करना, लॉन्ड्री खुद करनी है, खाना खुद पकाना है, एग्जैक्टली. आपने अपनी अरेंजमेंट सारी खुद करनी है. या. एंड It's a great feeling, but some of them can't do it. But एग्जैक्टली. I don't think it will be that much of a shock to you. It's nothing that you can't handle. Yeah. हाँ, एग्जैक्टली. एंड मुझे तो शुरू में बहुत बड़ा इशू लगता था ये बिकॉज ऑनेस्टली I don't do a lot of housework.
So, the guy actually prepared me for all of this. And I was like, seriously? कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे क्या? ये भी होता है खाना? What? Right. But now I just think I've gotten a lot more comfortable to that. I started doing my own work घर पे. Mhm. मेरी Mhm. अम्मा को भी इतना वो लग गया था है what you're making your own bed, you're helping me in the kitchen, really? I'm like, Right. Ma, okay, some good is coming out of this अभी से देखे ना आप. चलो अच्छा है, you're prepping yourself for that. That's good. Yeah, Self I improvement. am. Exactly. चलो सही है. So where are you now? Currently, what's your status on this relationship that you started? आगे plan क्या है? मामा को मनाना है और क्या करना है? हाँ अम्मा को तो बनाना है definitely, but अभी the like me and him we are very stable. Like शुरू में हमारे मसले होने लगे थे अम्मा वाली situation की वजह से because I think वो अल्जीरिया का भी culture वैसे baseline तो पाकिस्तान जैसी है, कि how Right. my god how कोई out of country तो नहीं होता वहाँ पे भी. तो Mhm. I think उसके parents को मनाना थोड़ा I think maybe he can just convince them better or something. I don't know. But Acha. But say you mentioned his parents seemed more open to you than your parents seemed to him. oh yeah, well his dad is a little bit reluctant. उनको भी लग रहा है कि ये joke है मेरी माँ की तरह. लेकिन लेकिन in the end I think उनको ज़्यादा इतना problem नहीं होगा. Yeah. His mom is like okay with it. Like she's chill. Mhm. And Okay. honestly I think at the end of the day what can they do? I know it sounds a little harsh, but Mhm. at the end अब कितना मना कर सकते हैं किसी को, Mhm. I think maybe they've thought कि इस तरह का हो सकता है और and they are really accepting, एक तो होता है ना कि आप accept कर लें और आप mean हो जाएं and just ऐसे ही हो जाए, but they're not like that. They're like really sweet and kind and सब कुछ बहुत accepting, inviting and all that. Mhm. तो उसकी यहाँ से the situation I think set है. Yeah. Okay. That's good. Yeah, and me and him, we're really stable. I mean, abhi to bas, he's doing his work, I'm doing Hmm. my work. We don't talk as much, obviously, because summers se pehle, ab to he has a job and, I'm busy, but I guess he's more busy Yeah. Right. because he needs to support himself, obviously. Mhm. So, yeah. And Amma wali situation, we had I had a conversation with Mama like about a few weeks ago, abhi sabse Mhm. recent wali, and she still like so much resentment to the idea of somebody outside of Pakistan. Abhi to mujhe Ah. nahi lagta that she's gonna be comfortable with it. I Hmm. mean, because now I guess she knows it's real now, it's happening. It's not a joke, and Right. yeah, and especially जब मैंने उनको बोला था कि he is going to come, so it's not like Mhm. online ही हो जाएगा सब कुछ. Mama, it's okay, have some patience, Yeah. I Yeah. guess it's a long way, but it's a slow process. So Yeah. I agree. Yeah. You're still young. He's still young, right? yeah, we both are. I would say. Yeah. I would say it's a good understanding. सच्ची है, तो it will last. Then जितने भी साल Yeah, लग जाएं, you will make it happen. So exactly. that's good. Right. बाकी Yeah. ये है कि I like that you're understanding के तुम्हारी अम्मा क्या कह रही हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हाँ. कुछ लड़के लड़कियां आजकल के जो एक कान से अंदर लेते हैं, बात दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं. दूसरी कान से निकाल. But you seem to understand at least where your mom's coming from. Yeah. एज का थोड़ा एज का थोड़ा है कंसर्न. बाकी हाँ. लोकेशन का कंसर्न है. ये भी हो सकता है कि Hmm. you need a backup plan. Maybe Paris में Hmm. काम नहीं बनेगा. So Yeah. you've thought some of those things through. Yeah. And obviously there's still a lot to think about, still a lot to plan about. So Right. अभी तो सिर्फ just like उनके सामने एक बिठाना है कि this is a thing. It's Yeah. going to happen, hopefully. But yeah. Right. Yeah. Well, good luck. Hopefully, whatever is best will work out. No, thank you. यहाँ पे तो लड़कियाँ इतनी देर इंतजार करती हैं nowadays. Yeah, I And the know. age is getting pushed even more. Exactly. और यहाँ पे actually ऐसा है कि 20 somethings they're not mature enough anymore actually. पहले एक ज़माना था. Hmm. My mom got married at 19, right? My mom got Yeah. married and she came and she moved in with my dad, my father's whole family. And it was Oh. marriages were much more traditional back then. So Yeah. मेरी अम्मी, she handled the whole house by herself. She cooked for everybody. सफाई सारा कुछ, by herself. And she was Exactly. only 19. और अब
अब आप 19 साल के बच्चियों को देखो and forget it 19, I'm talking about like 24, 25-year-old girls are still in bed all Yeah, exactly. checking out Instagram and लड़के भी मेरा of सब course not just girls हाँ but लड़के भी हैं but मेरा ना सबसे बड़ा I think difference with the guy was that I was more towards the spoiled side. I mean more hmm. like a year ago. अब तो खैर बहुत change आ गया मेरे में अच्छा वाला लेकिन good yeah, so when we first like started talking and stuff, it's like, what kind of a lifestyle do you have? You do nothing. You hmm. study and then you sleep, you watch Netflix, and everything is being done for you. Everything. Like ऊपर से नीचे नीचे तक, and then you just go to sleep. And then this is just your life. Hmm. And then मेरे भी thinking में आया कि oh my god मैं क्या कर रही हूँ अपनी life के साथ, you know, Hmm. why am I not learning new things? Why am I not more independent? And I guess वो वाले yeah changes मेरे अंदर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. right yeah you mentioned you started working around the house a little bit more Yeah, exactly. शुक्र है हम दोनों इतने ज्यादा spoiled नहीं थे वरना तो क्या होता. yeah I mean हाँ, it's good you're only 18 and you're getting those types of feelings yeah. I'm talking about like mid 20 somethings who are still not they haven't gone through that phase yet Yeah. I mean that's sad. I guess एक आखिरी question maybe it's a difficult Hmm. one थोड़ा मुश्किल Hmm. question I'm starting to see this trend of more and more kids not just Muslim kids non-Muslim जो Hmm. भी but I guess especially Muslim community में और Pakistani community में ये बड़ा sensitive Hmm. होता है कि बच्चे अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ Hmm. शादी या dating वगैरह करें dating का culture obviously it's even more हाँ, controversial dating right culture बहुत exactly. very controversial तो what do you think about that like अगर parents आहिस्ता आहिस्ता in your case parents आहिस्ता आहिस्ता Hmm. थोड़े convince हो रहे हैं तो you can see some progress then maybe it's not too bad लेकिन I'm talking about cases where let's say your mom was completely like वो मजाक भी ना समझे completely she rejected the idea वो ये Hmm. भी ना समझे कि ये मजाक कर रही है या आहिस्ता आहिस्ता like your mom did she talked to the guy eventually right which Hmm. Hmm. some moms might not even talk right बिल्कुल चांस ही ना दें तो हाँ. अगर ऐसी सिचुएशन होती तो what do you think should be done मतलब माँ बाप के sentiments को उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए what are your हाँ. thoughts on this it's a difficult question Yeah, it is. पहले तो मुझे लगता है कि logically थोड़ा उसे देखें भाई दोनों दोनों sides the person who's going through whatever and the parents. Sometimes I feel like parents कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जैसे I mean मेरी माँ तो खैर इतनी ज़्यादा Mhm. नहीं है जहाँ पे compared to like other people जो यहाँ पे हैं and other Of places in course the world. I guess if it's too much, like if the parents are like completely against everything, no chance, giving no chance, अब बिल्कुल future में भी कोई chance नहीं है, and everything is perfect. मतलब जाहिर सी बात है सारे जो issues हैं जो logical issues हैं not the not the other issues जो parents को होते हैं but the mm. logical real issues if they're all addressed then I right think the marriage should go on. I mean हाँ I mean obviously अब बंदा सोचे कि यार भाग के तो नहीं ना शादी कर लेनी you know yeah exactly ये भी सही बात है to reinforce your point obviously ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है right तो हाँ exactly मतलब you've accepted the risks हाँ and for me like personally family बहुत 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 बड़ा part play करती है मेरी life yeah में and even in the future and I hope to like pass that down to my children that Mhm. family is बहुत important चीज very होती है important ऐसे तो नहीं ना अब मतलब अब I think culture थोड़ा drift apart हो रहा है उससे कि family को इतनी ज़्यादा Mhm. importance नहीं देते और parents से बहुत like I think emotional gap भी है और टॉक ही नहीं करते लोग मतलब आई रिमेम्बर मैं ग्रेड 3 में अगर मुझे ग्रेड 3 नहीं ग्रेड 5 6 में मैं फर्स्ट टाइम मुझे क्रश हुआ था मैंने अम्मा को जाके फर्स्ट टाइम बताया था कि ओ माय गॉड आई एम इन लव मेरी दोस्तें मुझे कह रही हैं कि है व्हाट व्हाई डिड यू टेल योर मॉम ओ माय गॉड आई एम लाइक honestly at this point I think मेरी अम्मा should be my best friend उस टाइम सही पे बात right it's what was your yeah mom's so reaction then तब भी मजाक समझ ओ मेरी मामा रहे तब मेरी मम्मा तो कह रही थी अच्छा मुझे बताओ उसके बारे में मम्मा हर चीज में थोड़ा थोड़ा करती थी इससे बेहतर मिल सकता है तुम्हें वैसे मैं बता अच्छा मम्मा uh, grade 5 में कितनी उम्र होगी like 10 years old right हाँ 10 years old मुझे भी जरा वो बारबी से निकल के दूसरे रियल वर्ल्ड में डिज्नी में मैं आई थी पहली दफा तो एंड
like in regards to dating, ऑनेस्टली पाकिस्तानी कल्चर में अब जो मेरी जनरेशन है, जो मेरे छोटे हैं हमसे, dating is pretty common. Like everybody dates, हम्म, everybody, and I'm talking 95% people just date. So अब अच्छा, I think मेरे माँ बाप को भी इतना शौक नहीं लगता, शायद लाइक मम्मा को इसलिए लगता है, पहले शुरू में ज्यादा मेरा लगा था, बट आहिस्ता आहिस्ता अम्मा इज लाइक, अभी मेरे भाई आई नो ही इज रियली यंग बट यू नो ही हैज अ गर्लफ्रेंड एंड माय अम्मा इज वाओ, लाइक अच्छा ओके ठीक है। अब अम्मा को पता है चलना तो नहीं है ये आगे, लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ अगर पुराना जमाना होता तो फिर तो कोई बड़ी उसकी हम्म, फैंटी लगती ही वुड राइट, हैव राइट, बीन लाइक बीटन अप और समथिंग। हम्म, लेकिन है पता है यूजुअली पेरेंट्स आर ओके विद इट यूजुअली। अच्छा, अच्छा, अब आके पहले तो नहीं खैर, लेकिन अब आके डेटिंग इज प्रीटी ओके। एंड इवन हम्म, माय अम्मा शी वाज लाइक, मैंने उनसे बात की थी इसके बारे में कुछ साल पहले, बिकॉज आई वाज एंटरिंग द phase where I was like, this is an interesting thing. लोग कर रहे हैं मेरे से, क्या होता है ये? तो अम्मा ने भी मुझे बोला कि I'm not completely against it because अब के ज़माने में I guess times change, so you have to change as well. But yeah. अब बड़े okay, she was like, Let me ask you this. वहाँ पे, hmm, do you think the definition of dating is different in Pakistan versus the definition of dating, let's say, in Western American society, for example? मैं पूछ रहा ये हूँ हाँ, कि, for example, जो parents को समझते हैं dating आजकल की है, is that different versus जो बच्चे समझते हैं? I'm talking about, like, let's say there are situations where, लड़की रात को 1-1 बजे तक बाहर घूम रही है, घर नहीं हाँ। आ रही, और पेरेंट्स को पता है कोई चक्कर है, या लड़का, लड़का कोई बाग में पकड़ा गया है and he's like making out or something, उसके Hmm, उसके चचा ने उसको देख लिया है or something like that. नहीं, I think situation बहुत split है because कुछ families are like okay with kids being out late and stuff, and even if उनको dating का नहीं पता, बाहर late रहना तो इतना कोई वो नहीं है, इतना बड़ा Yeah. like town talk होता है ना, वो नहीं है अब इतना। नहीं, मगर अगर उनको एक पता है कि लड़की मतलब और यार लड़का, they're out with somebody else. I feel हाँ, इसमें इनक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बॉय की सिचुएशन में अगर लाइक पेरेंट्स को पता है तो कितना अच्छा था ठीक है, और गर्ल की सिचुएशन में तो इट्स Hmm. डिलेमा हो जाता है कभी कभी कि हाय Yeah. अल्लाह लड़की क्या कर रही है, इवन दो द गाय इज डूइंग द सेम थिंग, Mhm. बट अभी भी आई गेस एज अ सोसाइटी वी हैवंट प्रोग्रेस्ड इनफ से Yeah. कि भाई दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, तो आई थिंक Right. लड़की पे ज्यादा वो बात आ जाती है। Hmm. But then again, it depends on like family to family. I mean, I know so many people who are okay, both ways. Both ways. Yeah. Dating is fine. Yeah. Hmm. तो मतलब back to the question though, मतलब उधर मतलब डेटिंग लोग किस किस्म की करते हैं वहाँ पे? फिल्म देखने चले जाएंगे अच्छा, या हाँ ये मैं बताती हूँ, बड़े डिटेल में बताती हूँ मैं। um, well, it starts off like, खैर बाहर के मुल्कों में खैर मुझे तो पता नहीं है, बट जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है वहाँ पे तो फॉरेन एवरीथिंग इज लाइक रियली ओपन, एंड पेरेंट्स को भी पता लग ही जाता है एट सम पॉइंट। Mhm. यहाँ पे तो आप हाइड करते हैं पेरेंट्स से फुल ऑन, लाइक ओके Right. यू फ्रेंड्स विल नो, योर सिबलिंग्स माइट नो, एंड लाइक ओके सब हो रहा है, फिर उसके बाद आई थिंक फिजिकल रिलेशंस में इतना ज्यादा नहीं जाते लोग, थोड़ा लो रखते हैं Right. उसको, एंड मोस्टली जहां तक मैंने देखा है इट डजंट रियली लास्ट, छोटी उम्र में शुरू हो जाता है और फिर टलता नहीं Hmm. है। Puppy love, right? हाँ, Puppy love. या या Like आई गेस I don't know, चिड़ी इश्क, I don't know पंजाबी में उर्दू में क्या कहते होंगे. आई थिंक मैंने सुना है। हाँ, जाते हैं लोग, डेट्स पे भी जाते हैं, बट थोड़ा Yeah. छुप-छुप के जाते हैं। हाय अम्मा का दोस्त नहीं देख ले कोई, या बाबा का कोई ना मिल जाए, अम्मा-अब्बा ही ना Mhm. मिल जाए। Right. स्नीक आउट तो नहीं होता, बट तो चलो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आगे से चले गए और गए, यू नो ये Hmm. होता है, बट नॉट ओपनली कि यू जस्ट टेल योर पेरेंट्स कि आई एम विद दिस पर्सन, ऐसा नहीं है। Hmm. ऐसे नहीं है. But at the same time, नहीं, you mentioned कि at least कराची और बड़े शहरों में parents they know कि अब ये होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हाँ, थोड़े से आई गेस हाँ, accepting हो बड़े गए. शहरों में ज़्यादा ऑब्वियसली, स्पेशली लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। Yeah, I'm sure. Right. अब तो हाँ। सारे फिल्में देखते हैं यार. I know people Yeah. Pakistan who have seen more TV shows than I have, like American TV shows. वो मुझे बता रहे होते हैं, वो ब्रेकिंग बैड में क्या हुआ यार. I think I'd be like one of them.
Yeah. हाँ मेरे अब्बा भी कहते हैं तुम लोग अंग्रेजों की औलादे हो, देखते रहते हो सब कुछ, कोई तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग की अपनी चीजों के बारे में। उर्दू तुम लोग टूटी फटी बोलते हो, अंग्रेजी बस सीख लो। Ah. It's funny. Are we gonna see you in Pepsi Battle of the Bands or something? Yeah, Nescafe. हाँ एक Nescafe, I will like definitely go for that. लेकिन अभी I think अभी मुझे ज़रा college exams और university में थोड़ा settle होना है. No, I won't take like singing as a profession, like my primary profession, not like that. But if I want to keep it like on the side, I will. And for like in the future also side में stuff going on. Right. So yeah, I'm not gonna like stop trying just because मैंने कोई और profession ले लिया. Next thing you know, you have a really big audition in Pakistan. हाँ. यहाँ पे सारा काम बन जाए तो फिर उधर Paris कहाँ जाओगी? Then you're stuck. So it kind of makes sense, yeah. तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एपिसोड होगा actually. This was a very good talk. मुझे तो मजा आया. Thank you. मुझे भी मजा आया. Yeah. All right. Thanks, Imaan. Bye. Okay, bye. Thanks. Do you live in Pakistan and have a story similar to Iman's? Feel free to reach out to us, DM us on Instagram, or email us directly at hello@popcore.com, and we can connect you with Iman if you like. She wants to communicate with people who are in similar situations to her. And I've been so caught up in my job, didn't see what's